नमस्कार दोस्त स्वागत करुच्ची फैक्ट्स प्योर ओडिया चैनल रे। आज आम डिस्कस करवा गोटे खूब इम्पोर्टाट टॉपिक रे चाइल्डहुड स्टंटिंग, जार अर्थ होची अभिवृद्धि किंबा विकास रे अस्वाभाविक धीर किंबा विकास बंद रहा। सिंपल ओडिया रे कहया गले बयस अनुसार शरीर उच्चता ठीक रे न बढ़िबा। यह खाली गोटे हेल्थ इश्यू नुहे, यह भारतर भविष्य उपरे डायरेक्ट इंपैक्ट करुच्ची। ऑफिशियल डाटा अनुसार भारत में 137 मिलियन पिला मध्य 35% 5 वर्ष कम पिला स्टंटेड शिकार। मु चाहूँगी आपण ये ऑफिशियल डाटाटा देखूँ। आम देश में पूर्वर जो सब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन थिला से आमर हायर लेवल रो स्टंटिंग रेट रही, जहाँकि सब सहारा आफ्रिका ठारू अधिक। इंडिया एंड सब सहारा आफ्रिका टुगेदर 44% अटंती अंडर 5 इयर्स स्टंटिंग रे, किंतु आमे किछि वर्ष हम ये भल काम करी 35.7% और सब सहारा आफ्रिकार 49 देश 33.6% रे अछंती, जहाँकि आदौ एक भल साइन नुहे। एठी मु कहबाकू चाहे सब सहारान आफ्रिकान मीन्स आफ्रिकार साउथ पार्ट जो सेंट्रल आफ्रिका, ईस्ट आफ्रिका, सदर्न एंड वेस्ट आफ्रिका अच्छी। या भितर 49 कंट्री रोचंती। ये वीडियो रे हमरो डिस्कशन टॉपिक रहिबो स्टंटिंग कहा को कहंती, ये होता क्यों है, यार कॉन्सिक्वेंसेस कौन एवं यह को रिड्यूस करबा पई कौन उपाय करा जाय पारिबो। वीडियो मध्य रे हमरो 4टी इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप रही, जहाँ को देखले आपण माने पूरा वीडियोटी को सहज रे बुझी पारिबे। सो वीडियोटी को पूरा देखंतु। चलन ताले प्रथम जानिनेमा स्टंटिंग माने क्या कहते। सिंपल लैंग्वेज रे कहले स्टंटिंग हैला पिला निज पोटेंशियल हाइट और डेवलपमेंट रे पहुँची न पारिबा। साधारण कहया गले बयस अनुसार शरीर उच्चता ठीक रे न बढ़िबा को ही स्टंटिंग कहती। यही प्रोब्लेम सिर्फ फिजिकल नुहे, एटा इम्यूनिटी, मेंटल ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ए सब को अफेक्ट करि थाए। मु चाहूँगी आपण माने ये शॉर्ट वीडियोटी देखंतु। ए वीडियो रे क्लियर एक्सप्लेन करा जाइछि व्हाट इज स्टंटिंग। There is mystery in every new life, and new parents look forward to all of their child's firsts. The first smile, the first words, the first steps. What will he or she grow up to be? They wonder. But for too many parents, their hopes and aspirations are dashed by something unforeseen, tragic, and completely preventable. In 2012, an estimated 6.6 million children under the age of 5 died, mainly in resource-poor countries. Nearly half of those deaths, 45%, were attributed to undernutrition. For every child who perishes from undernutrition, many more never achieve their full growth and development potential. A staggering 162 million children under 5 were affected by stunting in 2012 alone. Stunting cannot be cured, but it can be prevented. In 2012, the World Health Assembly set a global target to reduce the numbers of stunted children by 40% by the year 2025. If achieved, that would mean 70 million children more on their way to a strong and healthy adulthood. The journey to achieve that target begins with understanding some basic questions. So what is stunting? Stunting is the impaired growth and development that children experience because of poor nutrition, repeated infection, and inadequate opportunities to play and learn. The World Health Organization, or WHO, has developed standards that describe normal child growth and are applicable to all children regardless of ethnicity, socioeconomic status, and type of feeding. According to these standards, children are said to be stunted if their height is low in relation to their age.
Scientific evidence has shown that stunting in early life, especially in the first 1,000 days from conception until the age of 2, has negative consequences for the child's physical and mental development. Stunting followed by excessive weight gain in later childhood leads to increased risk of overweight and adult life nutrition-related chronic diseases such as diabetes, heart disease, and some cancers. Most parents understand the importance of good nutrition for babies, but they may not know that stunting begins in the womb before the baby is born. For example, a study of Malawian children found that by the time they reached 3 years of age, they were 10 centimeters shorter than the WHO child growth standard median. 20% of that deficit. तो दोस्तों बुझिल हाइट रो कथा नुहे एटा ब्रेन और बॉडी रो डेवलपमेंट रो प्रश्न ओडिशा को फोकस करले एई प्रॉब्लम ओडिशा रो रूरल विलेज मानकरे सिवियर थाए। एबे जानी नबा स्टंटिंग हुए कौन पाई। स्टंटिंग हबार तीनटे मेन स्टंटिंग रो तीनोटी मेजर कारण हैला न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, प्रोटीन और विटामिन जैसे थिले बैलेंस ग्रोथ होगा सहज होता है। चाउल रुटी रे यह संभव हो पारे नहीं। द्वितीय पॉइंट रिपीटेड इन्फेक्शन, डायरिया भली इन्फेक्शन डिजीज बारंबार हेले पिलार हाइट ग्रोथ रे रुकावट पैदा करी थाए। थर्ड पॉइंट है पेरेंटल केयर लैकिंग, प्रॉपर फीडिंग और हेल्थ केयर पिला माने पाई पारु नाहंती। देखो ये छोट वीडियोटी यह आपको क्लियर एक्सप्लेन कराई दबो। What causes stunting? The main causes of stunting are found within the household and family. Poor maternal nutrition and health, inadequate breastfeeding, and infection all contribute to limited growth. All these factors can be modified. The question is, how? As life begins in the womb, a developing embryo relies on the food consumed by their mother to fuel growth, and this continues after birth through breastfeeding. Poor maternal nutrition limits the growth of the fetus. Poor fetal growth, in turn, increases the risk of neonatal death. In the first 1,000 days, the risk of stunting is closely linked to the mother's health. The likelihood of stunting for the baby increases if the mother is infected with malaria, intestinal worms, or HIV or AIDS. देखिलो यही रीजन को एड्रेस करिया पई एजुकेशन और सैनिटेशन मेजर फैक्टर्स रहबा दरकार। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टंटिंग, यही इश्यूर रिजल्ट बहुत सीरियस। हेल्थ प्रॉब्लम्स, फ्रिक्वेंट डिजीज आउ एनर्जी लैकिंग, पुअर एजुकेशन, स्कूल परफॉर्मेंस रे ए पिला माने पछरे पड़ी जाती एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट। स्टंटेड पिला बड़ होइले सेमानकर अर्निंग एवं अपॉर्चुनिटी मिस करती। एबे चलो देखिबा ए वीडियो रे। Let's now look at the immediate and long-term consequences of childhood stunting on health and development. For women, stunting is a direct risk factor for complications during pregnancy and delivery and for their baby's survival. Poor nutrition and frequent infection feed on each other, creating for the child a downward spiral of worsening nutritional status and increasing susceptibility to infection and diseases. Infection substantially impairs a child's nutritional status. It leads to reduced appetite, loss of energy, and diminished absorption of nutrients. At the same time, available nutrients are diverted from growth towards the immune response needed to fight infection. Poor nutrition can severely affect the developing brain of the fetus and newborn.
The stunted child subsequently starts school with a reduced capacity for learning and processing new information. This translates into lower scores on tests of attention, fluency, and working memory. Concurrent infections associated with stunting increase household expenditures on health care. In many cases, affected families are already facing financial difficulties. If the disease or infection is contagious, other children and adults can be put at risk. This is often compounded by a आपण बुझीपारे क्लीयरली देखु यही प्रोब्लेम ही गोटे पिलार नुहे या फ्यूचर जेनेरेशन को इम्पैक्ट करुथिबा भली डेंजर सिग्नालटे अटे। यार सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन को डिस्कशन करबा टाइम आसिलानी। यही प्रोब्लेम को सॉल्व करबा को हमें मल्टीपल लेवल अप्रोच दरकार। वन क्लीन वाटर एक्सेस जहाँकि सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर बहुत जरूरी अटे। सेकंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस पेरेंट्स आउ केयर गिवर्स को बैलेंस डाइट शिखेबार जरूरी। थर्ड गवर्नमेंट स्कीम्स पॉवर्टी रिडक्शन एवं फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम रो अवेयरनेस बढ़ेबा को पड़ेबो। चलो देखिए ए वीडियोटी ए वीडियो रे डिटेल्स आपण माने बुझी परिबे। Because stunting is a complex problem, nutrition interventions alone are not enough to prevent it. Nutrition must be integrated in development strategies. This is because government and other structures that influence economic policies, markets, and the provision of services can importantly influence food insecurity and undernutrition among the population. The political economy drives the availability, cost, and access to food. Social protection programs have demonstrated a positive impact on poverty reduction in some countries, but their effects on stunting rates have been limited. वीडियोटी देखिले आपण माने बुझी पारथिबे जे प्रॉपर प्लानिंग एवं कंबाइंड एफर्ट रे ए सब प्रॉब्लम को सॉल्व करबा संभव अटे। एबे डिस्कशन करिया मिड डे मील स्कीम विषय रे। ओडिशा रे मिड डे मील बा मध्याह्न भोजन स्कीम एवं मिलेट इनिशिएटिव बहुत इफेक्टिव हे पड़िछि। पिला माने बैलेंस मील पाई जाउछंती जहा इम्यून सिस्टम एवं स्कूल रो अटेंडेंस को इंप्रूव करूछि। यह थिला आज हमर आजर टॉपिक। यदि ये वीडियोटी आपको इनफॉर्मेटिव लागिछि देन लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं फैक्ट्स प्योर ओडिया को सब्सक्राइब करंतु। आगामी एपिसोड रे हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करियो। जय जगन्नाथ।